सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है सुपर केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं लाया हूँ इस वीडियो में वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों, गैस क्रोमेटोग्राफी ये फार्मा कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंस्ट्रूमेंट। इस पे इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस करते हैं फार्मा कंपनी में। तो इस पे कौन से इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके कॉलम जो रहते हैं वो क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन सा कॉलम यूज होता है। तो ये आपको सबको पता रहना चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो को लाया है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है दोस्तों, द सजेशन दैट separation of components of mixture in the gaseous state could be achieved using a gaseous mole phase was first by Martin and Sins in 1941. मार्टिन एंड सिंस ने सजेस्ट किया था gaseous state could be achieved using a gaseous mole phase. Okay, the first description of instrument and application was made by James and Martin in 1952. In 1952 में जेम्स एंड मार्टिन ने ये डिस्कवर किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एप्लीकेशन उसका। Gas chromatography is a technique used for separation of volatile compounds, means substances or a compound. जो volatile substances रहते हैं उसके separation के लिए gas chromatography यूज होता है, और substances that can be made volatile from one another in a gaseous mixture at a high temperature. आपको पता रहेगा गैस में हाई टेम्परेचर पे ये होता है। नाउ फर्स्ट, gas chromatography. Gas chromatography is the chromatography technique that can be used to separate a volatile organic compound. GLC or GC is a type of partition chromatography. GLC और GC ये दो टाइप रहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, इट्स हैविंग अ मोल्ड फ्लोइंग मोल्ड फेस, इट इज एन इंजेक्शन पोर्ट और सेपरेशन कॉलम द स्टेशनरी फेस और एन डिटेक्टर। तो देखो, इंजेक्शन पोर्ट है, इधर ओवन है, कॉलम है, डिटेक्टर है, रिकॉर्डर है, गैस सप्लाई इन सेकंड स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। नाउ इन थर्ड, दैट इज फंडामेंटल ऑफ जीसी। तो जीसी का फंडामेंटल क्या होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी यूजेस एज अ कैरियर गैस टू ट्रांसपोर्ट सैंपल कंपोनेंट्स थ्रू आइदर पैक column or hollow capillary column containing the stationary phase in the most gases. GC columns have a smaller internal diameter and are longer than HPLC column. In gas chromatography, the mole phase is gas and the stationary phase is either. तो गैस क्रोमेटोग्राफी में मोल फेज क्या होता है? गैस होता है, एंड द स्टेशनरी फेज रहता है वो आइदर अ सॉलिड कॉमनली टर्म एज गैस क्रोमेटोग्राफी GSC. So GSC का फुल फॉर्म गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एंड immobilized polymeric liquid refer as gas liquid chromatography. So GLC का मतलब gas liquid chromatography. Okay, so what are the two major types of GC? Now we will see in the next slide. These are a gas solid chromatography. Here the mobile phase is a gas while the stationary phase is solid. जो मोबाइल फेज रहता है वो गैस होता है, और जो स्टेशनरी फेज जो रहता है वो सॉलिड रहता है. ओके, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर गैसेस. एग्जाम्पल, एयर कंपोनेंट लाइक H2, हाइड्रोजन, S, CH2, CO2, rare gases CO, and oxide of nitrogen. Gas liquid chromatography. The mobile phase is a gas while the stationary phase is a liquid. इन सॉलिड में मोल फेज गैस रहता था, अपन स्टेशनरी फेज क्या होता था? सॉलिड में. ओके, और लिक्विड में स्टेशनरी फेज क्या होगा? लिक्विड. ओके, रिटेन ऑन द सरफेस एंड इनर्ट सॉलिड बाय ऑब्जर्प्शन और केमिकल बॉन्डिंग. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, द गैस क्रोमेटोग्राफी स्कीमेटिक. तो दिस इज द डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ गैस. तो सबसे पहले इधर तो रिकॉर्डर रहता है, इलेक्ट्रोमैटिक ब्रिज रहता है, AD रहता है, AND डेटा सिस्टम, सोप बबल मैटर, डिटेक्टर रहता है, इंजेक्टर, कॉलम ओवन, सिरिंज, रोट मीटर, फ्लो मीटर, टू स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, कैरियर गैस सप्लाई. सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी. ओके, नाउ जो हम सैंपल इंजेक्शन करते तो कैसे करते? फिल अ सैंपल वेपर ओनली इन अ सीरीज, नॉट इन लिक्विड, और फिल syringe then adjust to desired amount.
Do not let the sample remain in the series. Series में sample नहीं होना चाहिए. Long before injecting to avoid vapor loss into a rubber plunger of the syringe. Fourth, rotate the syringe when piercing the latex tubing to avoid a pressure surge which may be blow out to the flame. Fifth, inject as close as possible to the column head. Sixth, push the plunger fairly rapidly during injection. 7. Chloroform CHCl3 may require a larger amount than suggested to get adequate sensor response. So this is the types that we can inject a sample injection कैसे कैसे तो ये सब precaution लेना चाहिए. Okay. Now the split and splitless injector. So this is the carrier gas inlet, spectrum footage outlet, glass linear, split outlet, vaporization chamber, heat metal block, and this is the column. Okay. Now split mode. Split mode का diagram देखो तो here 2 ml spectrum per J, 46 ml to split vent. Most of the vaporized sample goes into split vent. 1 ml column flow, column flow always 1 ml. Column का जो flow रहता है always 1 ml. Okay. Now what are the which are the types of the column and what are the column that use in GC? These are the two types of column, that is pack and capillary column. सो पैक एक कैपिलरी कॉलम के दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे. पैक कॉलम फर्स्ट 1 to 4 मिलीमीटर आईडी 1 to 5 mm लेंथ. सेकेंड ग्लास स्टेनलेस स्टील कॉइल रहता है. थर्ड पैक सॉलिड पार्टिकल्स आइदर पोरस एंड नॉन पोरस कोटेड विद इन थिन 1 mm फिल्म ऑफ लिक्विड. सो जो डायग्राम जो है पैक कॉलम के इधर वो ऐसे पैक कॉलम रहता है. और कैपिलरी कॉलम में डिफरेंस क्या है. कैपिलरी कॉलम फर्स्ट 0.1 to 0.5 mm आईडी 10 to 150 लेंथ, उसका डायमेंशन जो लेता है लेंथ 150 लेंथ रहता है. सेकेंड थिन फ्यूज सिलिका. थर्ड इनर वॉल कोटेड विथ थिन 0.1 to 5 माइक्रोन फिल्म ऑफ लिक्विड स्टेशनरी फेस. और जो नीचे जिसको डायग्राम है वो कैपिलरी ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी बोलते हैं ओपन उसको. तो कैपिलरी कॉलम का इमेजेस है. ओके. नाउ पैक कॉलम इन जीसी. तो ये देखो ये है जो नेक्स्ट स्लाइड में पैक कॉलम का डायग्राम कैसे पैक कॉलम रहता है. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ ओपन ट्यूबुलर कॉलम मीन्स कैपिलरी कॉलम. सो देयर आर 3 also WCOT, S-COT, W-COT and plot. W-COT means wall coated open tubular. S-COT support coated open tubular and plot means porous layered open tubular. W-COT में liquid phase होता है. S-COT में solid support coated with liquid phase and plot में porous absorbance रहता है. So these are the types of open tubular column. Okay. Now gas chromatography components. जो गैस क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं. टॉप व्यू इंजेक्शन पोर्ट रहता है. फ्लेम आयनस डिटेक्टर रहता है. ये कॉलम का डायग्राम है. O1 इधर रहता है फ्रंट व्यू. सो दिस इज द कंपोनेंट्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी. नाउ व्हाट आर द डिटेक्टर्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर देयर इन GC. Thermal conductivity, that is we also known as TCD. Second, flame ionized detector, that is we also known as FID. Third, electron capture detector ECD. Fourth, nitrogen phosphorus detector MPD. Fifth, flame photometric detector FPD. Sixth, photo ionization detector PID. Seven, sulfur chemicals detector, okay, SCD. So these are the 7 types of detector that are in GC. Okay. Now what are the procedure? Now before injection of sample, wait till the baseline of recorder becomes perfectly horizontal. So whenever you will be injecting the sample, you have to wait that the horizontal perfect become a horizontal. The baseline जो रहता है horizontal में है कि नहीं, which indicate that GC is stabilized and conditioned properly. Second, inject the sample with micro syringe. जो micro syringe रहता है दोस्तों, injector port and start to run. Third, after all the peaks attend, stop the run and get integration result
Note the retention time and the area peak of each of the constituent of each sample. Fifth, plot the calibration curve and find out the response factor slope of the calibration curve for each of the constituent with respect to IPA, means isopropyl alcohol. The curves and the straight lines passing through origin. This will be the use of analysis of unknown sample. Next slide. Prepare the sample for calibration with various composition. Keep the amount of isopropyl alcohol fixed equal to 2 grams in each sample. 2 grams लेने का इस sample में. Start the apparatus switching on the hydrogen supply and set the parameters. ओवन जो रहता है टेम्परेचर 170 डिग्री पे, TCD रहता है 150 पे, इंजेक्टर टेम्परेचर रहता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, कैरियर गैस प्रेशर रहता है 4 kg per centimeter square. Start the isotherm. So these are the procedure that we use in GC. How the procedure we inject in GC. Okay. तो ऐसा कुछ पे क्या आएगा, मिथेनॉल का है, इथेनॉल का है, 50% मिथेनॉल इथेनॉल. सो दिस इज द रिटेंशन टाइम एंड ऑब्जर्वेशन. सो ऐसा पे कहता है जो ग्रीन जो है वो मिथेनॉल का है, जो रेड का है वो इथेनॉल का है. 50% जो है ब्लू में वो है इथेनॉल प्लस मिथेनॉल. ओके. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी? Now first, that is gas chromatography. GC is an instrument technique used for forensic in drug analysis, toxicology analysis with other organic compound. The GC is one of the popular instruments used in the world. Several application advantages included high speed of analysis in the matter of minutes, routine and less few analysis in matter of few seconds. Also possible, we see also both in rapid analysis as well as high sensitivity. For example, is a 2.5 minute of separation 3 common pesticides like methylparathene, malathane and ethane at PG levels. PG means 10 to 32 grams. These are the parts of billions. This is a very good example for both high speed as well as very sensitive detection. Okay. So this was the application of GC. Okay. Now what are the advantages and disadvantages of GC? Now advantages सबसे पहले देखेंगे. It is a simple, rapid and reproducible. Second, it is high sensitivity. Third, it have high performance. Fourth, rapid process and hence time saving. Fifth, it is having a high resolution and separation capacity. Sixth, accuracy and precision. Seventh, stationary phase was chemically inert. Eighth, wide varieties of stationary phase. 9. Mold phase was chemically inert. 10. Less requirement of mold phase in developing chamber. 11. Early recovery of separate component. 12. Is easy visualization and separate components. And it is having a good reproducibility. Next, it is an analytical technique is important to validation of product, quality control and studies of product. Next, it is important for qualitative and quantitative analysis. Okay. Next, it is used for both analytical and preparative purpose. So these were the advantages of a gas chromatography. Now what are the disadvantages of gas chromatography? Now what are the disadvantages of gas chromatography? First, the sample analysis are limited to those that are volatile can be made volatile. Second, the sample must be thermally stable to prevent degradation when heated. जब वो heat होता है तो it must be prevent a degradation. Okay. Third, cannot be used to prepare a sample for further analysis once separated. Okay. Fourth, problems can be encountered while injecting the sample. जब inject sample होता है तो problems भी दे सकता है. Okay. So these were the disadvantages of a gas chromatography. So this is the gas chromatography or diagrams of we use. That is nitrogen. जो green में nitrogen है, zero air, hydrogen, compressed air, nitrogen generator, zero air generator, gas chromatography installation example. So this is the diagram of GC. सो बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी दबाओ और अपने फ्रेंड्स को भी इस
वीडियो के बारे में सेंड करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि गैस क्रोमेटोग्राफी में उसके बेसिक क्या रहते हैं, उसके जो प्रिंसिपल, जो एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे सुपर केमिस्ट्री।